Weaknesses occur when the soul loses control over the physical and the emotional bodies. इंसान गलत रास्ते पे भटकता है जब आत्मा का कंट्रोल शरीरों पे नहीं है तो. You see, there is a small degree of soul energy always coming, but we need a higher degree of soul energy to restrain from our weaknesses and our negative ways and means in life. गलतियां करने से खुद को रोकना है तो हमें अपने अंतःकरण को बढ़ाना पड़ेगा. Yes, our antakarna has to become big, our root has to become big, the energy of the soul has to penetrate from above the head into the entire feet, down into Mother Earth. The size of the spiritual cord shows the degree of the control of the higher soul over the incarnated soul and its vehicles. जो आपका अंतःकरण है, स्पिरिचुअल कॉर्ड है, वो जितना बड़ा है उससे हम नाप सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि आत्मा कितना कंट्रोल कर रहा है शरीरों को और जीवात्मा को. Yes, the evolution of the soul must be accompanied by the evolution of the physical body. और याद रखें, जो अंतःकरण है या स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो हर एक झूठ के साथ छोटा हो जाता है, हर सेवा भाव के साथ बड़ा हो जाता है, हर गुस्से के साथ छोटा हो जाता है, हर गलती के साथ छोटा हो जाता है. तो आपके हाथ में है कि आप दिन भर करना क्या चाहते हो. Yes. So the evolution of the soul must be accompanied by the evolution of the physical body. Remember, the evolution of the soul must be accompanied by the evolution of the physical body. The physical body must evolve up to the degree that it can register the impressions from the higher soul and the spiritual experience of oneness. Okay. आत्मा की उन्नति के साथ साथ इन शरीरों की उन्नति भी होनी है. आत्मा की उन्नति के साथ साथ इन शरीरों की उन्नति भी होनी है. और ये शरीरें उतना हद तक इन्हें विकास करनी है, इन शरीरों को इतना हद तक उन्नति करनी है that they will be able to register higher soul impressions and the spiritual experience of oneness. आत्मा के मार्गदर्शन को समझ के उसके अनुसार चलने लायक होना चाहिए शरीरें, और आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रहण करके उस एकता को महसूस करने लायक होना चाहिए शरीरें. The vehicles should start registering the impressions from the higher soul and the spiritual experience of oneness. That is the requirement of the development of the vehicles. Can anybody be cut off totally from, can spiritual cord be completely absent? Only in Ashwatthama. Everybody else is connected to the higher soul, at least with a thin strand of spiritual cord, which is as thick as one strand of a spider's web. सिर्फ अश्वत्थामा ही होगा जिसके स्पिरिचुअल कॉर्ड को पूरा से काट दिया गया था. Now please understand this. Our physical bodies must evolve to the degree that it can register impressions from the higher soul. What is the meaning of the physical body? The brain and the nervous system should be able to bring down the impressions or the information of the higher soul and the spiritual experience of oneness has to be experienced. The greater the infusion of the divine energy from the higher soul, the stronger the soul contact becomes. You become more magnetic. कैसे कोई इंसान बहुत आकर्षण या charismatic? Yes, how does a person become charismatic or magnetic? By greater descent of the soul energy. The soul energy is the integrating factor
right? The soul energy will help all people to become one. जितना ज्यादा ऊर्जा आत्मा का आपके शरीरों में बह रहा हो, उतना ज्यादा एकता का अनुभव होगा और एकता के अनुभव के कारण लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे. मोहन, श्री कृष्ण, परमात्मा की ऊर्जा शरीरों में प्रवेश थी, तो इसीलिए लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते थे. हैं पांडव, कौरव, कोई उनके खिलाफ नहीं, सब उनके दोस्त बनना चाहते. The greater the infusion of the divine energy from the higher soul, the stronger the soul contact becomes. You become more magnetic. Soul energy is the integrating factor. Listen and understand this very clearly. If you still have problem with people, if you still have problem, if you still have fights, you have relationship issues, if you still have all this, the degree of soul energy you are radiating is not enough. And the easiest way to radiate soul energy is through your heart, through your heart seed, which brings down the soul energy. When your heart seed opens to a greater, when your heart chakra opens to greater degrees, greater soul energy can enter into your system and you become more magnetic. Soul energy is the integrating factor. जितना ज्यादा आत्मा का ऊर्जा आपके शरीरों के द्वारा बहेगा, उतना ज्यादा आप क्या आकर्षणशील हो जाओगे, something magnetic. Okay, yes. So people will get magnetized if you're able to have some more soul contact. They will listen to you. You will not fall into fights. For this, first of all, what you have to do, आपको काफी काम करना पड़ेगा. आपको अपने अंदर किसी भी मनुष्य के बारे में कोई भी जजमेंट कुछ नहीं रखना है. No prejudices, no judgments towards anybody. If I do not have any judgments or any prejudices towards anybody, if I'm accepting everybody as they are and I do what is right at the right point of time, मुझे अपने कर्तव्य निभाना है. अगर मुझे लग रहा है कि कोई इंसान किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको रोकना मेरा कर्तव्य है. कोई भी करता तो हम उसको रोकते, लेकिन हम अपने दिमाग में उसके विरुद्ध गुस्सा, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं रखते. We do not store things of anger, irritation or prejudices. We take decisions based on the existing situations. We do not judge based on past memories. If we are able to do this, the soul energy which radiates through us will be very, very high. आत्मा की ऊर्जा जो हमारे अंदर बहती है वो बहुत ज्यादा होगा. Yes, so you become more magnetic. The soul energy is the integrating factor.